Hello, good morning students. Welcome to e-learning. We are learning economic subject of standard 11 Gseb board, and we have started chapter 8, that is economic reform, and we have completed one lecture. Now earlier this in the previous lecture we have learned about the privatization and the process of privatization, where we have seen that how our public sector companies are being converted or been disinvested, मतलब उसको convert करके private sector को दे दिया, because many of the things were not handled was not handled by the government itself, but some of the basic things or some of the essential things were not given to the private, that is atomic energy and coal and different mining, different minerals mines. So this were not given to them, but apart from that many of the other things they allowed they allowed private investors to invest, and they open this particular field. Some of the things which were under the control of, we can say, state government was also given. So वो सब land property सब कुछ private वाले को invest करने के लिए दे दिया. So that is what we have learned about the privatization and the process of privatization, where disinvestment and some of the things or some of the reserve things were open for the private sector. Now today's lecture, lecture 2, we are going to learn about foreign investment in India and the foreign trade policy. Apart from that, the remaining topics are not there for your syllabus. So this chapter has so many reduction for the points, and only 3 points we are going to learn. That is privatization, which we completed in the lecture 1. If you have not watched, kindly watch that particular lecture and then watch this, then continue this lecture 2. Clear? So for privatization and process of privatization is the first point, then after foreign investment in India is the second point, and thirdly India's foreign trade. So these are the 3 points only which have been there for your chapter, and today we are going to complete this foreign investment in India and India's foreign trade. So in lecture 2 only your chapter is getting over. So kindly watch this full lectures, this both the lectures fully, so that your chapter concepts will be clear. Chalo, let's start foreign investment in India. What do you mean by foreign investment? Foreign investment मतलब हम जाके foreign में invest करें? No, it is the foreign people or the other countries who are investing in our India. How, when, why? Earlier कैसा होता था? If we talk about in the earlier time, we have seen that we are importing more goods. अभी भी import कर रहे हैं, but when the time of independence, you find that we were lacking in technology, we were lacking in industrialization. So that time what happened, we have to depend upon the other countries for their different machineries. हमको डिपेंडेंट रहना पड़ता कि फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर वहाँ से मशीन आएगी, तो उसके लिए हम क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर क्रॉप्स हम एक्सपोर्ट करते थे. सो एक्सपोर्ट के सामने वो लोग हमको डिफरेंट मशीनरीज, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, डिफरेंट वी कैन से टूल्स, वो सब देते थे, टेक्नोलॉजीज वाइज वो सब कुछ अपग्रेड देते थे. सो दिस इज़ हाउ द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड एक्सचेंज गोज ऑन बिटवीन द कंट्रीज. तो वैसे चीज़ चल रहा था, ट्रेडिंग एक्टिविटी चल रहा था, बट इट वॉज लिमिटेड टूवर्ड्स सम एक्सटेंट. बट हमारे कंट्री को डेवलप करने के लिए हमको क्या चाहिए, वी रिक्वायर दैट पर्टिकुलर सम ऑफ द गुड मशीन्स विच शुड बी डेवलप एंड विच शुड बी यूज्ड हियर रेगुलरली. सो उसके लिए और गवर्नमेंट हैज़ प्लान एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया, जिसके अंदर 1991 यू फाइंड दैट इन 1991 they planned that because of to get more and more imports or more and more industrial goods, we have to do more and more export. And in that we find that अगर उस टाइम पे इतना एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, वो पहले से नहीं हो रहा था, बिकॉज एग्रीकल्चरल गुड्स मनी इज और द प्राइस इज वेरी लेस कंपेयर टू द मशीनरीज. सो वी फाइंड हियर दैट दिस पर्टिकुलर कैपिटल इंटेंसिव गुड्स और वी कैन से दिस पर्टिकुलर मशीनरीज जो हम ला रहे, टेक्नोलॉजीज जो ला रहे, इट इज़ कॉस्टिंग सो मच, एंड आवर गुड्स विच आर एक्सपोर्टिंग आर लेस, एंड अल्टीमेटली वी हैव टू पे देम. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब एक स्टेटमेंट रहता है जिसके अंदर कितना इंपोर्ट्स हुआ है, कितना एक्सपोर्ट हुआ है, उसका टोटलिंग होके द डिफरेंस इज बीन मैनेज बिटवीन द कंट्रीज. मतलब फॉर एग्जाम्पल USA एंड इंडिया. सो USA एंड इंडिया इज ट्रेडिंग सम ऑफ द गुड्स. सो USA से कितना हमने इंपोर्ट्स किया, हमने कितना एक्सपोर्ट किया USA को, उसके बाद जो डिफरेंस बचा किसको ज़्यादा पेमेंट करना है. आइदर वी हैव मोर इंपोर्ट्स, वी हैव टू पे देम, आइदर देयर इज मोर एक्सपोर्ट डन बाय अस, दे हैव टू पे अस इन फॉरेन इनकम. सो इससे हमारा क्या होता था, balance of payment, that is what it has been there. So in that we find that we can able to know that how much imports we are doing. तो ज़्यादातर हम ज़्यादा चीज़ें फॉरेन टेक्नोलॉजी बाहर से लाते थे, इस वजह से
इस वजह से हमको फॉरेन इनकम देना पड़ता था, मतलब हमको हमारे कन्वर्ट पैसे करंट दैट इज रुपीज आर टू बी कन्वर्टेड इनटू डॉलर्स एंड दैट पर्टिकुलर डॉलर्स आर बीन पेड टू देम इन देयर कंट्रीज करेंसी because internationally standard currency is dollars. So we find that many a times it so happen that कि हमारे पास इतने फंड्स नहीं है, वी हैव टू बोरो, वी हैव टू टेक ऑन लोन एंड वी हैव टू पे विद द इंटरेस्ट. सो ऐसी चीज़ होनी चलती थी वहाँ पे. बट आफ्टर 1991 पॉलिसी, व्हाट हैपेंड इन 1991 पॉलिसी, वी हैव ओपन, आवर कंट्री वाज ओपन टू द वर्ल्ड. पहले कैसा था, इट वाज अ क्लोज्ड इकोनॉमी. क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब किसी से ज़्यादा एक्सचेंज नहीं करता था गुड्स, वो बहुत सारी कंपनीज को, फॉरेन कंपनीज यहाँ पे आने नहीं देता था. बट वी हैव ओपन एंड द ग्लोबलाइजेशन का स्टार्टेड कमिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेटाइजेशन आ गया, बाद में ग्लोबलाइजेशन आ गया. तो इससे क्या हो, हमारी कंट्रीज भी बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फॉरेन कंट्रीज भी यहाँ पे आके import means they can set up the business. So this was allowed, and in that FDI plays an important role. FDI means foreign direct investment. So investors who want to invest here from the other countries who want to invest in our country, that is our home country, they can invest. So that can be possible after 1991. After 1991 industrial policy which has been changed and our country was open to them. In that we find that foreign investors came and set up the business. उन लोग को यहाँ पे इन्वेस्ट करना, उन लोग को यहाँ पे बिजनेस बनाना. So that is why we find that after 1991 so many companies, foreign companies came in India, and because of that only we find in today till 2020 we find so many different foreign brands are very common to us because they have set up or they have started coming from where, from 1991. सो इससे क्या होता है, वाई इट वॉज बीन डन, बिकॉज वी शुड हमको हमारे पास पैसे नहीं थे. आवर गवर्नमेंट वॉज नॉट हैविंग दैट मच मनी टू पे फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी और वी कैन से मशीनरीज, हैवी मशीनरीज. सो वो मटीरियल्स मशीनरीज लाने की वजह से, लाने के लिए बहुत भारी पड़ता था, और एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट के लिए बहुत पैसे देना पड़ता था. सो इट इज़ बेटर टू allow them to start business here and they will bring their technology. So इसके अंदर they will bring their technology, they will bring their material, they will start the business. What will happen, any business which has been started or any company which will start, it requires labor. The labor will be of our home country. Their company is there, their investment is there, but the labor will be for our home country. So it will create job opportunities, it will create employment opportunities. So this was the fundamental thing where we can find that हम हमारी जॉब इंक्रीज कर सकते थे, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ा कर सकते, बिकॉज इंडिया वॉज अ लेबर कंट्री. लेबर कंट्री मीन्स देयर वॉज सो मेनी पॉपुलेशन की वजह से बहुत सारे लेबर्स है, एंड दैट इज़ वाई वी फाइंड दैट टू गो विद दिस पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज इन 1991 में ही हमारा डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो गया. डेफिसिट मतलब देयर वॉज अ लैकिंग मनी, तो हम ऑलरेडी माइनस में चले गए थे. तो उसको रोकने के लिए the formulation in our policy was been made, that is in 1991, and then after we have started this foreign investment in India. Now what are the different types of foreign investment? Foreign investment सिर्फ FDI डायरेक्ट इन्वेस्ट करके कंपनी खोलेंगे, नो, there are two different types of foreign investment which we are going to learn and which can be done. So foreign capital, बाहर का पैसा कैसे आ सकता है? First is foreign institutional investment. Institutional investment means this particular foreign institutional investment, in that पहले तो दो चीज़ होती है, एक तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट वी फाइंड दैट दिस पर्टिकुलर, इसको FII भी बोलते हैं, this particular foreign countries will not purchase or will not start any company here, but they will purchase the shares, they will purchase the bonds, they will purchase the debentures. So हमारे मार्केट के अंदर हमारे लिए जैसे शेयर वगैरह ओपन है, वैसे ही उन लोग के लिए ओपन हो जाएगा. फॉर देम ऑल्सो इट विल बी द सेम ओपनिंग टू परचेज दिस पर्टिकुलर, मतलब वो लोग भी हमारे शेयर्स मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो नो मैटर इट इज़ अ शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स और वी कैन से प्रेफरेंस शेयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी है वो इसके अंदर वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो दैट इज़ व्हाट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, वेयर दे डू नॉट ब्रिंग एनी टाइप ऑफ मशीनरी, दे डू नॉट ब्रिंग एनी टाइप ऑफ प्लांट और कुछ भी, बट दे ट्राई टू इन्वेस्ट इन आवर कंपनीज मनी. तो उससे क्या होगा, उससे हमारी कंपनी को पैसे कहाँ से मिलेंगे, फॉरेन कंपनी से मिलेंगे, एंड फ्रॉम दैट फंड दे ट्राई टू यूटिलाइज एंड डेवलप आवर, मतलब जो भी उसका कंपनी है होम कंट्री का यूज़ कर सकते, एंड दे गेट व्हाट, डिविडेंड. अल्टीमेटली उन लोगों को फ़ायदा क्या होता है, डिविडेंड मिलता है. सो यू फाइंड दैट दे ट्राई टू बाय सच टाइप ऑफ स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड शेयर मार्केट्स के अंदर दे ट्राई टू इन्वेस्ट, विच हेल्प्स आवर कंट्री, आवर होम कंट्री कंपनीज
to get more and more investment. It is also known as portfolio investment. Foreign institutional investment को दूसरा नाम क्या है? So either it can come in your examination for 1 or 2 marks. Explain portfolio investment or what is portfolio investment. So you have to remember both the names, portfolio investment or foreign institutional investment, where these foreign companies does not start any business or do not open any business, but they try to invest their money, capital in our companies, home countries. They try to invest in where? They try to invest in bonds, share market, stocks, debentures, तो उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे. क्लियर? सो दिस इज हाउ दे ट्राई टू गेन मनी फ्रॉम अस एंड हमको भी मिलता है पैसे. सो आवर कंपनीज, आवर जो कंट्रीज के शेयर मार्केट, उन लोगों को फंड्स ईजिली मिलेंगे. क्लियर? देन कम्स द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI. Now foreign direct investment means here they does not buy any share, they only startup company, they directly startup one. So they try to invest in our company by taking 49 to 51% of share, जो भी पार्टीशन में 50-50 नहीं तो 49-51 का रेशियो रहेगा, and then after they start the company here. So this is how so many foreign companies came up here. Even though they completely 100%, अभी तो 100% उन लोग की कंपनी वो लोग स्टार्टअप कर सकते, that is it is foreign company itself, बट पहले मर्जिंग वाला था. क्लियर? सो वी फाइंड दैट इंडियन इन्वेस्टर्स वर नॉट गेटिंग दैट मच मनी. इंडियन जो भी कंपनी स्टार्ट करना चाहता था तो उन लोगों के पास इतने इन्वेस्टर्स नहीं थे, पैसे नहीं थे, तो कौन पैसे लगाएगा? तो यहाँ पे FDI काम करता है. सो FDI विल हेल्प देम. FDI विल मतलब फॉरेन डायरेक्ट, आप ओनली कॉन्टेक्ट्स यू हैव टू मेक. इफ योर प्रोजेक्ट, इफ योर प्रोडक्ट इज वेल एंड गुड, you find that your idea is well and good, the foreign company is ready to invest, and that is why you find that this particular things happen. Same thing if you have seen news in the this particular pandemic situation, lockdown time, from March till May or June, our Reliance company has acquired so many foreign investment. यस नो? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसके अंदर बहुत सारे हुए, जिन लोग ने बहुत सारे स्टेक लिए हैं उनके अंदर. सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट वॉज बीन डन बाय द फॉरेन कंट्रीज in India because Reliance is having digitalization. Reliance have so many different visions for our own country and it is a very well nation. तो मतलब इसके हिसाब से, और इवन फॉरेनर्स क्या सोच रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज थिंक्स दिस इंडिया एज अ ग्लोबल मार्केट. वाई? बिकॉज द पॉपुलेशन इज मोर हियर. Population is more here. So ultimately this particular FD, or we can say foreign companies, directly construct their building plants by bringing different machineries, materials. वो लोग डायरेक्टली लाएंगे, तो हमको वो पैसे हमको वो इन्वेस्ट करने की ज़रूर नहीं है. द मेन अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट इज वॉट, we were suffering from losses, we were not having that much enough funds to purchase their company, so their machineries from them. सो वी अलाउड देम टू स्टार्ट देयर कंट्रीज. वो लोग अपनी मशीनरीज लाएंगे, वो लोग अपनी मटेरियल्स लाएंगे, वो लोग अपनी गुड्स लाएंगे एंड यहाँ पे प्रोड्यूस करके बेचेंगे. सो दिस इज व्हाट हैपनिंग. और एल्स दे ट्राई टू कोलैबोरेट विद आवर इंडियन कंपनी, मैचअप करेंगे एंड वो लोग थोड़ी बहुत मशीनरी ला के यहाँ पे करेंगे. इससे एक ही फ़ायदा होगा, बहुत सारे फ़ायदे होंगे, एक नहीं. एक फ़ायदा ये होगा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएगी. दूसरी फ़ायदा क्या होगा, जो गवर्नमेंट ने सोचा था कि हमको डायरेक्टली पैसे नहीं, डायरेक्टली मशीनरीज लाने की जगह पे उन लोग को ही इन्वेस्ट करने दो. सो इट वॉज हैपनिंग एंड बिकॉज वी हैव सो मच अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, दे ईजिली गेट अट्रैक्टेड. बिकॉज यहाँ पे डोमेस्टिक कंपनी का इतना कुछ इन्फ्लुएंस नहीं है इन देयर फील्ड टेक्नोलॉजी वाइज. बेस्ट एग्जाम्पल भी फॉरेन मोबाइल फ़ोन्स. अभी ये जो हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन्स, मैनी ऑफ यू आर हैविंग नो मोर, ओनली आई थिंक सो 1% ऑफ द विल बी हैविंग ओनली इंडियन फ़ोन्स. ज़्यादा से ज़्यादा वीवो तो इन्फिनिक्स या वो सब होंगे जो इंडियन फ़ोन्स है, मैक्स अलावा. लेकिन उसके अलावा सबके पास वीवो, ओप्पो, सैमसंग. So this particular thing you find that the foreign companies are been allowed to set up their projects. यहाँ पे प्रोडक्शन करो, मेड इन इंडिया. अभी MI के फ़ोन्स भी मेड इन इंडिया बन गए, बट दो द कंपनी इज़ ओन बाय द डिफरेंट पर्सन, फॉरेन कंट्री की है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मेड इन इंडिया आता है. वो वीवो, ओप्पो के पीछे भी, क्योंकि उन लोग का प्रोडक्शन हब यहाँ पे बना दिया. सो दिस इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. क्लियर? सो दिस कंपनीज ट्राई टू मैनेज द एंटायर बिजनेस. मैनेजमेंट भी मैनेज करेंगे, बिजनेस भी मैनेज करेंगे, और हमारे यहाँ से जो भी लोग हैं उन लोगों के साथ पार्टनरशिप करके वो चलाएंगे. यू फाइंड दैट सैमसंग हैज़ मेड बिग हब हियर इन इंडिया, नोएडा के अंदर, कि वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्शन सैमसंग के फ़ोन बना सकते. बिकॉज वी फाइंड इंडियन पीपल्स वर मच इन्फ्लुएंस विद द सैमसंग मोबाइल फोन्स. क्लियर? सो दैट इज़ वॉट वी फाइंड हियर.
Now, talking about foreign direct investment, we are going to learn about the nature of foreign direct investment. So what is the nature of foreign direct, मतलब foreign direct investment से हमको क्या फ़ायदा पड़ता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक टाइप की. सो इट इज़ द फिजिकल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट, मतलब डायरेक्टली हमको पैसे मिलेंगे इन्वेस्ट करने के लिए, फिजिकल इन्वेस्टमेंट. क्लियर, कोई वर्चुअल नहीं, फॉरेन डायरेक्ट. लेकिन इंस्टीट्यूशनल सिर्फ स्टॉक मार्केट के अंदर परचेस करते हैं, बट यहाँ पे वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, लैंड परचेस करेंगे, प्लांट एंड मशीनरीज लाएंगे. It brings machineries, materials, wealth to our country, because if these particular things are brought here, it has been set up here, the production is done here. When production is done here, it has been sold out here, and उससे हमारी होम कंट्री को ही फ़ायदा मिलेगा. देन आफ्टर इट ब्रिंग्स डिफरेंट न्यू टेक्नोलॉजीज, यस अपडेट, बिकॉज हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी में अपडेट नहीं है, उन लोग के पास है, तो दैट पर्टिकुलर न्यू टेक्नोलॉजी विल कम ईजिली एंड फास्टर इफ वी अलाउड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंपनीज को यहाँ पे ओपन करने दें. सो दैट इज वाई इन 1991 दे मेड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इज द मेन कॉन्सेप्ट, एंड आवर इंडस्ट्रियलाइजेशन revolution was being changed. It brings different work culture, yes. So different work culture, if you see, if you have heard about Google, so what is the work culture of Google platform? It allows you to work in your flexible time, at your flexible time. अपने flexible time पे आप काम कर सकते हो, whatever is 4 hours, 8 hours, 12 hours, whichever so you can select your own time. So this is how they have different work cultures. So many of the companies have different work cultures, so that employees बाहर ना जाए, एक कंपनी से दूसरी कंपनी एम्प्लॉयज़ ना जाए. सो दिस आर द वेरी इंटरनेशनली बिग कंपनीज, सो they have to maintain their employees, or else their secrets will go to the other country. So there is good quality of work culture which can be developed here in India. India will allow this FDI continuously, systematically, you find that there is more number of foreign income, मतलब इससे हमारी foreign income बढ़ी, and we no need to depend upon डायरेक्ट एक्सपोर्ट की इससे ज़्यादा मिलेगी, तो इससे एक अलग से हमारा फॉरेन इनकम आने लगा. क्लियर, सो दिस इज़ व्हाट यू फाइंड इट. इवन फॉरेन कंट्रीज यहाँ पे, तो वो इफ़ दे आर एस्टैब्लिश हियर, प्रोड्यूसिंग हियर, दे हैव टू पे टैक्स टू अस. सो इन दैट ऑल्सो वी ट्राई टू गेन मनी, आवर गवर्नमेंट ट्राई टू गेन मनी. सो दिस वॉज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट विच इज़ बीन हैपनिंग अप. नाउ व्हाट इज़ अ पॉलिसी, व्हाट आर द इंडियाज़ पॉलिसी फॉर फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड करने की पॉलिसी क्या है, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से क्या हुआ. सो दैट बड़ी, तो हियर सम ऑफ द चैलेंजेस विच आर बिन देयर. फर्स्ट, दे हैव टू कंट्रोल ऑन सर्टन इम्पोर्ट्स, कि हमको कौन से इम्पोर्ट्स कराने चाहिए, कौन पे इम्पोर्ट्स नहीं कराने के लिए है. सो दैट बिकॉज हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन वाले, मतलब डोमेस्टिक कंपनीज जो है, our own national companies which are been there, they should not get affected from them, because if foreign companies goods and everything will come here, they will compete with our goods. आज हमारे पास हमारे मोबाइल फ़ोन्स की कंपनी कहाँ है, पहले माइक्रोमैक्स थी, लावा थी, आई थिंक सो, हाँ, तो दिस पर्टिकुलर, तो वो लोग कहाँ गए, बिकॉज ऑफ दिस फॉरेन कंपनीज हमने ज़्यादा उन लोग को पुशअप दिया, तो यहाँ पे बहुत सारी चाइनीज़ कंपनीज एंड कोरियन कंपनीज केम अप एंड दे स्टार्टेड देयर सेलिंग आउट. सो सम प्लेसेस, सम टाइम वी हैव टू कंट्रोल अवर इम्पोर्ट्स ऑल्सो, सो दैट कि कंपटीशन बढ़ा रहे, नहीं तो हमारे डोमेस्टिक वाले नीचे चले जाएंगे. देन वी हैव टू मेक श्योर दैट इम्पोर्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, मशीन, स्पेयर पार्ट्स आर अवेलेबल, एज वेल एज बहुत सारे जो रिसोर्सेज चाहिए वो भी अवेलेबल हो हमारे लिए. सो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन शुड बी देयर. सो इससे क्या हो कि इससे डोमेस्टिक वाले को भी फ़ायदा हो. सो बिकॉज दो दे आर ब्रिंगिंग देयर मशीनरीज बट दे आर सेलिंग हियर, सो डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज डन एंड इट शुड बी डन वेरी वेल विद दिस हेल्प ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी इटसेल्फ. सो इट विल कम अंडर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. देन कंट्रोल ऑन इम्पोर्ट्स फॉर एसेंशियल गुड्स, सॉरी अनएसेंशियल गुड्स. अनएसेंशियल गुड्स मतलब जो हमको काम के नहीं है वो चीज़ ना लाए. फॉर इंडियाज़ डेवलपमेंट, जो हमारे हमारे जो चीज़ जो सेफ्टली होनी चाहिए उसके लिए हमको कुछ करना नहीं है. सो अल्टीमेटली यू फाइंड दैट कि सम ऑफ द गुड्स विच आर अनएसेंशियल फॉर आवर कंट्री, उसको ना ही लाओ, उसको इंपोर्ट करो ही मत. ओनली दोज गुड्स विच आर नीडेड एंड इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन इंडिया शुड बी इम्पोर्टेड, सो दैट वी कैन हैव अवर फॉरेन, बिकॉज उसके लिए हमको अलग से फॉरेन के अंदर, मतलब फॉरेन करेंसी से पैसे देने पड़ेंगे. इफ़ अनएसेंशियल गुड्स स्टार्टेड कमिंग अप, व्हाट विल हैपन, वी हैव टू पे देम मोर एंड आवर करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी, उसकी प्राइसिंग डेप्रिशिएट हो जाएगी. देन कम्स
to encourage more and more export. So we have to develop, फॉरेन कंपनीज आ रही है यहाँ पे एक्सपोर्ट, तो हमारी कंट्रीज ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लगे, फॉरेन एक्सचेंज उससे ज़्यादा बढ़ेगा, उससे हमारे पास पैसे फॉरेन कंट्रीज़ को पे करने के लिए ज़्यादा आएंगे. सो दैट इज़ वाई वी फाइंड दैट इफ़ यू हैव heard or learn about फॉरेन एक्सपोर्ट की बात करूँ तो 2014 में व्हेन मोदी जी केम इनटू द रूल, दे हैव मेड अ पॉलिसी दैट टाइम 451 or 450.9 something million dollar export was been done, and he told that by the end of 5 years of his tenure there should be, in 18 there should be double amount of it. That is, they have the vision for 5 years, 2014 से 2018 तक there should be the double of the imports, and they have achieved the target. And for this time he has taken a goal for in within the 5 years, that is 5 trillion economy. 5 trillion मतलब total of amount नेशनल, हमारा टोटल नेशनल प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 5 ट्रिलियन हो. तो उसके लिए उसने क्या किया, ही प्लान टू मेक मोर एंड मोर एक्सपोर्ट्स. ही अलाउड फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इसको आने दिया, और ही प्रमोट सो मेनी डोमेस्टिक कंपनीज टू स्टार्टअप हियर एंड प्रोड्यूस गुड्स एज मनी एज एंड इट कैन बी एक्सपोर्टेड, विच कैन बी एक्सपोर्ट. तो इसकी वजह से हमारा इंडस्ट्रियल गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर सके, उसके लिए उसने एंकरेज किया. देन मैनी गुड्स विच आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, मतलब मेरी इंडियन गुड्स शुड नॉट, मतलब गुड क्वालिटी ऑफ फॉरेन कंपनीज के साथ compete नहीं कर सकता. तो उसके लिए हमने कुछ किया कि उसके लिए हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, कि जो चीज़ें हम यहाँ पे compete नहीं कर सकते लेकिन अंडर डेवलप कंट्रीज़ के अंदर पहुँचा सकते हैं, लाइक अफ्रीका और डिफरेंट प्लेसेस, तो वहाँ पे वो गुड्स पहुँचाए, जिससे हमारा वो लिंक ना टूटे और हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ता जाए. सो अल्टीमेटली सम ऑफ द क्वालिटी गुड्स इन फॉरेन कंपनीज के साथ में हमारी कंपनीज का थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड डाउन हो रहा है, तो उसको क्या करो, वो दूसरी कंट्री से बेटर है तो उसको वहाँ पे एक्सपोर्ट करो. देन प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इन स्मॉल स्केल सेक्टर. सो ज़्यादा से ज़्यादा कौन से गुड्स करो, स्मॉल स्केल सेक्टर. व्हाट इज स्मॉल स्केल सेक्टर, दो सेक्टर वेर स्मॉल सिंपल टूल्स, ऑटो पार्ट्स, रिपेयर पार्ट्स एंड सम ऑफ द कंज्यूमर गुड्स विच आर बीन प्रोड्यूस आर बीन एक्सपोर्टेड. तो उसको एक्सपोर्ट करो, बिकॉज इंडिया इज़ वेरी फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, आर्टिस्टिक थिंग्स. तो वो चीज़ स्मॉल स्केल सेक्टर के अंदर आता है, उन लोग को ज़्यादा बोलो कि ये प्रोड्यूस करो, उससे हम क्या करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट गेन करेंगे, मतलब सॉरी फॉरेन इनकम, फॉरेन करेंसीज विल गेन इफ वी ट्राई टू एक्सपोर्ट मोर एंड मोर ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड एवरीथिंग, स्मॉल स्केल सेक्टर वाले गुड्स. देन लास्टली वी फाइंड दैट, lastly the challenge comes that the foreign trade are different from those of domestic trade and foreign trade involves foreign exchange. यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं कि लास्टली कंक्लूजन के अंदर कि हमारा फॉरेन ट्रेड जो कर रहे हैं उसके अंदर हमको फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज ओनली हैपन्स व्हेन यू ट्राई टू एक्सचेंज गुड्स विद द फॉरेन करेंसी इटसेल्फ. स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड करेंसी इज डॉलर, सो उसके अंदर ही हमको एक्सचेंज करना पड़ता है. लेकिन डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक वी हैव टू एक्सचेंज ओनली इन रुपीज़. जैसे इंडिया की बात करें तो वो लोग रुपीज़ में एक्सचेंज करेंगे, वन स्टेट टू अनदर स्टेट. सो हियर when we try to go with more of import, we have to see we are doing as much as export. तो एक्सपोर्ट करेंगे तो वो बैलेंस थोड़ा बहुत आएगा, तो हमको कम ही अमाउंट उनकी करेंसी में पे करना पड़ेगा. इफ़ वी ट्राई टू मोर import and less of export, we have to pay them more. If we try to do more of export and less of import, they have to pay us in their currency or in dollars, which will give us foreign income. सो दैट दिस पर्टिकुलर चैलेंज कम्स, एंड हमको उसके लिए क्या करना है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है. एंड मोर ऑफ गुड शुड बी ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मोर ऑफ गुड शुड बी ऑफ स्मॉल स्केल. उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, स्मॉल स्केल के अंदर ज़्यादा लेबर्स यूज़ होंगे, एंड द मार्केट फॉर स्मॉल स्केल, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले जो गुड्स है, हैंडीक्राफ्ट, आर्टिस्टिक थिंग, एवरीथिंग शुड बी एक्सपोर्टेड, विच विल हेल्प अस टू गेन फॉरेन इनकम. लास्टली वी कैन से ऐसे टाइम टू टाइम हमको चेंजेस ला के हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाना है. एंड दिस इज हाउ यू फाइंड दैट फ्रॉम 2014 टू 2018, इफ यू सी द डेटा, इट वाज 2014 it was $450 million of export which was been done, which increased to the double of, and that was the vision for the Modi ji. And now he is planning for 5 trillion, but अभी pandemic situation से I think so there is a delay in 5 trillion economy. 5 trillion economy के लिए अभी delay है, but let's see what happens till 2022. Clear? चलो, तो if you find any doubt, any problem regarding this particular chapter, you can message or comment below in this particular video. Clear? Till then, write down, enjoy, learn. See you soon.